Let's start a very important session for your exam point of view. RBI circulars for the month of June. First is RBI's income. This is going to be one of the most hot questions for this exam. RBI का income last year 2.11 लाख करोड़ था, इस बार 2.69 लाख करोड़. ठीक है, 2.68 something है. So we are taking it as 2.69 lakh crore. Okay, so it rose by 27%. This could be important for your exam point of view. And RBI has given the same amount, almost the equal amount as a dividend to government of India. ठीक है, 2.69 lakh crore to government. That is 0.12% of the GDP. This much RBI has given to their owners. Who is the owner of Reserve Bank of India? Government of India, 100% stake. So the amount you give a private limited company to gives to its stakeholders is called as a dividend. Even if you invest in share market, you get it. आप भी जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको जो कंपनी अपने प्रॉफिट के का हिस्सा देता है उसको डिविडेंड कहते हैं. आरबीआई भी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है कुछ प्रॉफिट रिटेन करने के बाद. तो 2.69 लाख का नेट इनकम उसने अर्निंग किया है, नेट प्रॉफिट अर्न किया हुआ है. ठीक है, और 2.69 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए डिविडेंड भी दिया हुआ है. तो कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर जो पहले 6.5% था उसको बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है. बैलेंस शीट का 7.5%. I am speaking both in English and Hindi. Rest is in your PDF. You can see it. Contingency buffer means the additional amount Reserve Bank of India keeps for an emergency situation. This is an emergency fund. So emergency fund of Reserve Bank of India is called contingency risk buffer. So how much amount they retain every year? 7.5% of balance sheet amount they keep for their future use. So, okay, who's told that 7.5% will be the contingency risk buffer? किसने बोला है ये? तो इसको बोला है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ECF. 55th मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC. डेट इज June 4 to 6, 2025. Bank of Baroda local bank officer vacancy is out. It is in the same line of SBI CBO and other local bank officers. For the first time this vacancy is out, yet we have to tell you a lot of success stories from similar vacancies of BOB. BOB में ये पहला वैकेंसी है LBO को लेकर, बट इसी तरह के बाकी वैकेंसीज में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देने के बाद नॉलेजिस्ट लॉन्च कर रहा है BOB LBO का बैच. इसके लिए सैम्पल सक्सेस सेशंस एंड सैम्पल प्रोफेशनल बैंकिंग सेशंस आर बीइंग रिलीज्ड बाय नॉलेजिस्ट one by one in your YouTube channel. So check it out and stay inspired for the next big batch, for the next big success session from Knowledgist in BOB LBO. Thank you. The last monetary policy was held in June. Next one will be held in August. So monetary policy committee is headed by Chairman Sri Sanjay Malhotra, who is the governor of RBI, ex officio chairman. By the virtue of being the governor of India, he is the chairperson of MPC. Who are the other members? Dr. Nagesh Kumar, Sri Saugat Bhattacharya, Professor Ram Singh, Poonam Gupta, Rajiv Ranjan. Dr. Rajiv Ranjan. बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने बोल दिया. क्या हुआ है पॉलिसी रेट में? पॉलिसी रेट रिड्यूस्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट. नॉर्मली 25 बेसिस पॉइंट कम होता है, इस बार बड़ा बदलाव हुआ है. 50 बेसिस पॉइंट मींस 0.5%. ओके, आफ्टर द परसेंटेज जैसे 1.5 हमने वी मेंशन्ड 1.5, 1% के बाद 1% को हम 100 BPS कहते हैं. ठीक है, जो बाकी बचा 0.5 दैट इज 50 बेसिस पॉइंट. ठीक है, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, राइट? सो 50 बेसिस पॉइंट्स गॉट रिड्यूस्ड मींस 0.5% got reduced from 6 to 5.5. SDF came down to 5.25. MSF rate came down to 5.75. Accordingly सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा. Inflation target, you know that the monetary policy has only one target in its mind, to keep inflation in check. Inflation को चेक में रखना RBI कमेटी का काम है. Additional objective, economic growth etc. Inflation target band 2 to 6%, or you can say प्लस माइनस 2% of 4%. ओके, ये तो स्टैटिक पार्ट है. डोमेस्टिक ग्रोथ परफॉर्मेंस, ये क्वार्टर वाला ग्रोथ नहीं आता है. फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ 6.5 दिस ईयर. फुल ईयर जीबीए ग्रोथ 6.4%. ठीक है, जीडीपी ग्रोथ आपको देखना होता है, जीबीए एग्जाम में नहीं आता है. ठीक है, सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर ईयर ऑन ईयर टिल अप्रैल 2025 फेल डाउन टू 3.2%. ये एक चीज याद रखिए. फुल ईयर एवरेज फोरकास्ट नेक्स्ट जो ईयर है उसके लिए
सीपीआई इन्फ्लेशन का टारगेट 4% से घटकर 3.7% का टारगेट है, मतलब नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन कूल डाउन होने वाला है, 3.7% रहने वाला है। एवरेज 4 इज ओके, बट वी आर गोइंग बिलो दैट अप टू 3.7%। ओके, सो yes, MPC meeting, minutes of the MPC meeting is always published after 14 days of the MPC held, जो 6 तारीख को हुआ था, यानी कि 20 जून को आपका रिलीज होगा। और नेक्स्ट एमपीसी आफ्टर 2 मंथ्स, दैट मींस अगस्त 4 to 6 2025 को रिलीज होगा। ठीक है, ये तो की रेट्स हैं, जैसे आपके पनिशमेंट रेट्स, अगर आप पेनल इंटरेस्ट रेट इफ यू डोंट मेंटेन सीआरआर एसएलआर, तो उसी हिसाब से 0.3 या 0.5, फर्स्ट डे के लिए 0.3, बियॉन्ड दैट 0.5 ऑफ बैंक रेट प्लस 5% of bank rate. Also, at the same time, in the last policy rate, cash reserve ratio got reduced by 1%, that is 100 basis point. That means now it is 3% of NDTL, net demand and time liability. बैंक के net demand liability क्या है? बैंक के current account, savings account. Time liability is the bank's time liabilities are the term deposit accounts. ओके, द एंटायर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 3% होता है आपका सीआरआर। पहले 4 था, घटकर 3% हो गया। ठीक है, इट विल कम डाउन इन 4 इक्वल ट्रेंचेस ऑफ 25 बेसिस पॉइंट ईच। एक ही साथ कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे 4 मॉनेटरी पॉलिसी में वो चेंज होकर 3% हो जाएगा, धीरे धीरे आपका वो डाउन किया जाएगा। ठीक है, by November 29, 2025, it will be 3%. So now what is the revised percentage? Tranche 1 from September 6, 2025, it will be 3.75. So that means what is the current CRR rate? It's still for 4%. 3.75 कब होगा? सितंबर 6 तारीख से 3.75 होगा, अक्टूबर 4 से ये हो जाएगा 3.5। होप यू पीपल आर गेटिंग। ये मॉनेटरी पॉलिसी ही है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी का रेट्स है। ठीक है, बाय नवंबर 29 इट विल बी 3% ओनली। ओके, टिल नाउ आज ऑन योर एग्जाम डेट इट इज गोइंग टू बी 4%। whenever post September 6 it will come down to 3.75. okay, the impact, it will release 2.5 lakh crore by December 2025. When you reduce CRR, more liquidity is infused to the market. आप जब CRR घटा देते हो तो मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाता है, क्योंकि बैंकों के हाथों में बहुत ज्यादा पैसा होता है लेंडिंग करने के लिए। बैंक अपने यूटिलाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कम रिजर्व करना होगा। आप जैसे इमरजेंसी 50,000 सैलरी है, 10,000 सेविंग करेंगे तो 40,000 आपके पास खर्चा करने के लिए मिलेगा। अगर आप बिल्कुल सेविंग नहीं करते, 10,000 सेविंग करने की जरूरत नहीं है, कल से 5,000 करिए, तो आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा बढ़ जाएगा। एट दैट मींस योर लिक्विडिटी पोजीशन विल गेट एनहांस्ड। सो सिमिलरली विथ दिस रेट कट, विथ दिस सीआरआर कट, it is expected that it will infuse 2.5 lakh crore by December 2025 to the market. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिससे आपको आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। रिवाइज्ड आरबीआई डायरेक्शंस ऑन लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलैटरल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी। ये लोन का पॉइंट नहीं है। This gold loan revision is not about credit management, it is about general banking. as a general banker जब आप ब्रांच में पोस्टेड होंगे, आपको गोल्ड और सिल्वर लोन, जो गोल्ड लोन है वो एज ए यूटिलिटी आपको देना पड़ेगा कस्टमर को। इट्स ए बेसिक नीड, आप मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो आरबीआई सेज इट अलाउज लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड लोन मतलब आप गोल्ड का जो बिस्किट्स है उसको लेकर जाएंगे, प्राइमरी गोल्ड लेकर जाएंगे, आपको लोन नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट गेट लोन अगेंस्ट प्राइमरी गोल्ड लाइक द ह्यूज बल्क गोल्ड स्टोन और गोल्ड बिस्किट। यू डोंट गेट देयर, राइट? So where you get it? Loan against gold bullion means primary gold के against में restricted है। Why? Because the speculative nature of gold एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग इक्विपमेंट है। आप उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हेजिंग होता है, इसलिए अलाउ नहीं है। किसके अगेंस्ट में अलाउ है? गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर, इन सम केसेस सिल्वर यूटेंसिल्स एटसेट्रा। ओके, तो क्या क्या कुछ डेफिनेशंस आप गोल्ड लोन के बारे में समझ लीजिए, आपको ये सर्कुलर समझने में आसानी होगा।
bullet loan repayment. Bullet repayment in gold loan means loans where principal and interest is paid in maturity. Normally हम PL लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, हम इंटरेस्ट कब पेमेंट करते हैं? हर महीने EMI के साथ. बट बुलेट लोन रिपेमेंट में 12 महीने के लिए आपने गोल्ड लोन लिया, 12 महीने के बाद between 12 months you have to pay nothing. After 12 months you will pay principal and interest both. That is bullet repayment. Collateral security means the instrument you give to take to secure a loan. Consumption loans. Consumption loans means loans not related to income generating processes. ठीक है, कुछ लोग लोन लेकर, जैसे पीएम स्वनिधि क्यों दिया जाता है? इट्स ए इनकम जनरेशन लोन, राइट? पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएमईजीपी, वो लोन क्यों दिया जाता है? लोन लेकर आप कोई आएगा बोलेगा कि दारू पीने के लिए पैसा नहीं है, पीएमईजीपी का लोन दे दीजिए. Would you give them? No, you will give PMEGP, PM Swanidhi not for tourism purpose, not for travel, not for consumption, not for use case. You will only give that loan for employment generation. But gold loan, in gold loan there is a part is consumption loan. मतलब बेटी का शादी है, घर में मैरिज फंक्शन है, कोई घूमने जा रहा है, तो गोल्ड लोन can be taken as a part of consumption. Let's discuss the MCQs. How can banks facilitate KYC update for activation of inoperative accounts? Yes, very good. See, at all branches, including non-home branches. Very good. Be little fast with me. Under D funds, banks are required to report unclaimed deposits once every decade, annually, monthly, or never. B, it is annually by September 30. Okay, by September 30. What is the full form of strips? What is the full form of strips? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में CRR 3% है, मतलब CRR 4% है. अगर पूछा जाएगा कि नया CRR रेट आफ्टर 29th of November कितना होने वाला है, that is 3%. और in phased manner RBI has decided to cut down CRR rate in phased manner in 4 tranches to what amount? तब 3% है. आज के डेट में कितना है ना? 4% है भाई. स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, यार ऑप्शन 1 नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड लिखा है इसलिए नहीं है, रजिस्टर्ड है. ठीक है. एडी बैंक्स में अलाउ इंपोर्टर्स बैंक टू मेक एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ शिपिंग वेसल. शिपिंग वेसल के लिए कितना अमाउंट पेमेंट कर सकते हो? Without any bank guarantee, without an unconditional irrevocable standby letter of credit, what maximum amount you can give? Yes, USD 50 million. USD 50 million. Very good. Well done, guys. What is the new rate, new commission applied to conducting government business payable by RBI to banks for receipt in electronic modes? Agency commission. What is the new agency commission? Receipt in electronic mode. It is ₹12. Yes, ₹12.